Okay. So as per our dashboard also, it is Nifty is bias, bullish bias. So as per the momentum, you can read this Nifty data, positive bias as per momentum. So option study, you can 24 to 50 or any other strike price that you wish. Okay. Smaller one. This is 14 rupees. Call option. In the morning itself, we got it. So whereas when you see the market is crossing and forming a green candle here, then 2466 above there was a green candle. Then at the same time 918, the same strike price or any other strike price that you wish to trade. This is for example 24,000. You can take Nifty 24,000 call option. This also we can add. Use GAN levels. So perfect. So come over here and check the 918 candle, which has got formed a green candle, and you can take the price of this candle. This is closed as 11750. So here in this calculator, there is useful thing. Come down and just put it 115. Okay, and your entry is 127 is your entry. Perfect, safe entry. So here you can come over here and check 127. Okay, just mark a line like this. 127 is our entry. Or okay, around that area is our entry. So in this candle we got an entry and it went up to 169. So this is how it works. Then you can see that there is a VWAP. I'm using VWAP also. You can use the VWAP also. So here there is a green candle. Here our entry is somewhere here. Let me mark it with the price tag, price label. This is our 127. In fact, when you want to check any levels, the previous candle's close is always good. The previous candle close, the first candle close is or 85.50. So you can come over here and put 85.50 and you get an early entry of 94. Okay, early entry of 94, or add, you can add some buffer 99, say 99. So this is our entry, and from here it went up to 174. Either you can enter, use GAN calculator, or you can use option calculator, 24,000 call option, and you can use this. Okay. First of all, you have to change the strike price, like instrument. It is Nifty here. So based on the bias, we have seen the bias is positive bias. So immediately we go here and check. This is the next month. So we'll go here in the current month. Takes little time, but it will give you very good, very fast information. Nifty 24,000 call option, 177. Now, as of now, it is 177. This is our previous day high. So previous day high of this or the same option, 24,000. So you can expect this to move up to this. Anybody who wants to calculate their own strike price, I mean, what you call the targets. First of all, remember whichever strike price, whichever candle you are entering. For example, if you are entering into this candle, in this candle, take the high and low, 41 or 42 rupees. So first make a half of it. Divided by 2 is almost 22 rupees. So your entry is here and 22 rupees is your first target. In case if at all if you want double targets 1 is to 2, then it is 1 is to 2 here. And even if at all if you want 1 is to 3, it is 1 is to 3 here.
So as of now, our target is 1:3. The first entry is here. You can use VWAP also. When you see a weak candle testing this zone, for example, 3 times it has come red with red candle, and it touched it and tested this zone, and this zone means our VWAP. Okay, it went up to 174. 174 is high. So our stop loss would be swing low. The first candle low is this much. If at all, if you can't bear that much, you can also use your calculator. Okay. For 85, it is 79.94 only, just for 4 or 5 points. Okay. This is how we can use Nifty. Okay. The same. So this in this channel, those who are here, they have got 926. We got an alert. So 920. Before that itself, we can use our GAN levels. So GAN levels are the best to use and understand the levels. So for GAN levels can be used for Bank Nifty as well. No worries. Anything that you want to trade, Sensex or Bank Nifty, Nifty, whatever you want to, you can trade in that. Okay. So our GAN levels, we got it. And these are the Fibonacci levels I am sharing with you nearly. The Fibonacci levels are bullish reversal are here 23, 885, 885, and 24, 178 is a reversal. See here, you can see bullish reversal is 2400. So from here itself, you can see 2400. You can see this 2400 at Fibonacci levels also works very well. Okay, you can correlate with Fibonacci levels and GAN levels. So the nearest down when it is written here 24,062 paise. Okay, just come over here and 24 and 65 paise. This you can see from here itself it is bullish. This also gives you early in the morning before just market opens and you'll get it. So as soon as market opens, it gives you 24,062 exactly from here itself. Market turned bullish. Okay, exactly from here itself, market turned bullish, and then you can see the next level was given 24,178 is a bearish reversal. So somewhere here, if at all, if market may 24,178 is the level where market may reverse, bearish reversal. Okay, this is Fibonacci levels. They are Fibonacci levels. There is also a bullish level. So now our option went up to 174. So this is how it works. Today is a monthly expiry. So whatever you get in the morning session, you please keep it safe and enjoy the profits. Okay. किसी को कुछ पूछना है नए नए ज्वाइन किए तो किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ. You can ask questions if you have. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर. सर 24,000 की एंट्री री एंट्री कहाँ से कर सकते हैं अगर वापस आता है तो? हमारा जो ट्रेंड चेंज अलर्ट्स के मुताबिक हमारा जो एक्चुअली देखा जाए तो 26 इज द टाइम दैट वी गॉट 126. तो जिस वक्त वो हमारा 26 पे इसको हटा देंगे. एक्चुअली दिस इज आवर 25 एंड 26. यहाँ देखिए ये एक्चुअली एज पर द ट्रेंड चेंज अलर्ट सिस्टम हियर इट इज ओके. दिस इज टुडेज जोन फॉर दिस ऑप्शन. जितने बार वो इतने इसके अंदर आएगी और वो अपने उतने बार मौका हमको मिलेगा ग्रीन कैंडल बनते बनते ही. यू कैन यूज दिस. ओके, राइट सर.
you change the time frame to 5 minutes or 3 minutes, whatever. बट राइट सर। अर्ली सी अब देखिए यहाँ वो नीचे आएगा, इसमें यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, और याद रखिए कल का हाई ब्रेक करेगा तो फिर 189 तक ये जाने के चांसेस है। और निफ्टी वैसे ही देखा जाए तो मैंने निफ्टी आपको फिबोनाची लेवल्स भी बताया कि ये रिवर्सल है, ये कोशिश करेगा यहाँ जाके, यहाँ अगर रिवर्स नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिवर्स हो रहा है तो यहाँ हमारा एग्जिट होना चाहिए। जितने जो भी हम लेंगे वहाँ यहाँ एग्जिट हो जाएंगे, कॉल ऑप्शन अगर लिए तो यहाँ हो जाएंगे, सेफ साइड है। राइट सर। नहीं तो अगर किसी को कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज सेफ एंट्री एंड सेफ एग्जिट। ओके सर। लेकिन आप तो, आपके पास तो इतने सारे चीज हैं, तो आप गैन लेवल्स यूज कीजिए आराम से, आप गैन लेवल्स में से जल्दी जल्दी हो जाएगी और जल्दी जल्दी एग्जिट भी हो जाएगा, और खेल खत्म हो जाएगा, दुकान बंद करके आराम से बैठ सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या स्टॉक हो, जो भी हो। ठीक है सर, राइट। क्योंकि ये बुलिश ही चल रहा है निफ्टी, हमारा बायस भी यही बोल रहा है, निफ्टी बायस। और एक बार स्टॉक्स भी देख लेते हैं। स्टॉक्स में जिसको ट्रेड कर रहे हैं जो, वो एक आसान चीज है कि आप यहाँ जरा गौर कीजिए, अगर कोई हम हमारे जो मतलब सेक्टर को आप देख सकते हैं, सेक्टर्स अगर अच्छे सेक्टर्स आ गए, उसमें से कोई स्टॉक आपको मिल गया तो बढ़िया। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ देख सकते हैं ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर अच्छा है, तो इसमें जो एफएनओ स्टॉक्स और ये कैश भी है, तो ये सब आज बुलिश है अभी। डिफेंस और एयरलाइंस, एयर ऑफ एयर स्पेस, यानी ये हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड देख सकते हैं एक बार। ये कल का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो कमिंग बैक टू निफ्टी, किसी को कुछ और पूछना है सर? अदरवाइज इफ एट ऑल, इफ यू आर टेकिंग नाउ, कोई अगर अभी ले रहे हैं तो यहाँ ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, यानी 149 के नीचे अगर आएगी तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। इसलिए इस यहाँ हमारा एंट्री एज पर दी जो अलर्ट्स जो फॉलो करते हैं, ये हमारा 154 का एंट्री है। और हाई कितना दिया सर? ये हमारा हाई 174, यानी 20 पॉइंट है यहाँ। और अगर फिर से वो यह कहा कि यहाँ इसमें ग्रीन कैंडल बनाती है इसके ऊपर, जैसे यहाँ बना है, वो हमारे लिए री एंट्री होगा। ठीक है, ये आज के लिए जोन है। आप टाइम फ्रेम आप आपकी मर्जी, 5 मिनट्स या 3 मिनट्स जिसमें भी रखते हैं। 3 and 5 आर गुड। ये वैसे जैसे निफ्टी ऑप्शन में हुआ, वैसे भी अगर ये यहाँ आके फिर से इस जोन को टेस्ट करता और यहाँ बुलिश हो जाते तो ग्रीन कैंडल देखते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल एंट्री होगी और यहाँ तक फिर जाएगा, क्योंकि यहाँ फिबोनाची लेवल्स है। सो दो लाइंस आपके लिए काफ़ी है, सबके लिए दो लाइंस में सुबह सुबह दे देता हूँ। वो लाइंस ऐसे ही मार्केट ओपन होने से पहले ही आप खींच लीजिए, ड्रॉ टू लाइंस लाइक दिस। సో అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రైట్. ఎవరైనా తెలుగు వారు ఉన్నట్టయితే రోజు పొద్దున్నే మార్కెట్లో నేను ఇస్తున్న లైన్స్ మీరు గీసుకోండి, 2 లైన్స్ గీసుకోండి, దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ గ్యాన్ బులిష్ అండ్ గ్యాన్ బెరిష్. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటర్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ క్యాల్కులేటర్లో పైన మీకు కనిపిస్తుంటుంది, కెన్ సీ యువర్ నిఫ్టీ గ్యాన్ బులిష్ అబౌవ్ 2463, గ్యాన్ బెరిష్ బిలో 2425 అని మీ దాంట్లో ఉంటుంది, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో నిఫ్టీ పాజిటివ్ బయాస్ ఉంది యాజ్ పర్ మొమెంటమ్. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్పైరీ, చేంజ్ ఎక్స్పైరీ హియర్, double click to change expiry. You can double click, or in your mobile you can touch it, and when you long press it you get a calendar. Okay, you can change next month also. If at all nifty आपको next week में trade करना है तो you can just select the next week expiry, and it will let you know whether condition is bullish or bearish. तो आजकल जो सेबी का नाम्स जो आ गया, इसके वजह से मैंने बुलिश की जगह मैंने कुछ पॉजिटिव कुछ वर्डिंग चेंज किया है। और किसी को कुछ
दिक्कत है तो आप उससे समझ लीजिए कि पॉजिटिव मूवमेंट यानी बुलिश है। तो ये रहा हमारा कंडीशन बुलिश है, तो फिर हम ये कोई रिकमेंड भी करता है 24,150, चलिए 24,150 देख लेते हैं। या अगर आप सोचते हैं कि प्रीमियम ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट मंथ का है तो 24,200 और 250 जो भी आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन का एंट्रीज एग्जिट सब कुछ दिया गया है। ओके, yeah, that's it for the day. If at all if you need any more information you can call me back and no WhatsApp में मैसेज कर सकते हैं आप, या टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट कुछ है, वी कैन डिस्कस और आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज इट। सो यहाँ आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी मिल जाएंगे। वीकली जो है पॉजिटिव है, अभी नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव है, तो चलिए वो उसके मुताबिक हम उससे एज पर दैट वी कैन ऑल्सो नो टेक ट्रेड्स। But remember, today is expiry, monthly and weekly, monthly, all monthly expiry. So you should be cautious. Volatility ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे हम हमारा प्रॉफिट भी घट जाएगा। इसलिए जो है सुबह जो आता है प्रॉफिट उसको आप बना के रखिए ऐसे। So don't lose your capital, don't lose your money. So trade wisely and safely. Consistency of profit is very, very important. Okay. Thank you very much for your time. We'll meet you again tomorrow. Okay, right. Thank you, sir. Thank you. Thank you.